Assalamualaikum students, I hope you're doing well. This is Zinia here and I welcome you all to STEM International. So we were doing our English 6 book and the chapter that we had started was the little boy Haris और उसकी हमने जो exercise है उसके कुछ parts किए थे जिसके अंदर हमने वो questions which were related to the topic, to the story उनको हमने देखा था, attempt किया था and then we also learned some new words, some literary devices जिसके अंदर hyperbole आ जाता है, personification आ जाता है, so and so and now it's time कि हम इस ही exercise के next part को start करें. So let's dive in. Alright students, so we're gonna start with the Go grammar part और यहाँ पे हम articles देख रहे हैं कि there is a particular kind of group of words जिनको article कहा जाता है. An article is a word that comes before a noun. There are 3 articles, a, an and the. आर्टिकल वो लफ्ज़ होता है जो कि किसी भी नाउन से पहले आता है prior to writing a noun और इसमें 3 इकसाम हैं इसकी a, an और the. Types of articles. There are 2 types of articles in English. Indefinite articles जिसमें a और an शामिल हैं and then we have the definite article जिसमें the शामिल है. Next page पे हम देख रहे हैं कि there are general rules of using articles और उसके अंदर the first one is कि place an article before a noun. किसी भी noun से पहले article को जो an article है उसको हम रखने जा रहे हैं जिस तरह for example an apple. इसी तरह से हम the article को पहले रखेंगे तो it would be playground, the playground. ऐसे ही the third article हमने पढ़ा था a, उसको हम before a noun रखेंगे तो we can get a desk. The second rule is place an article before an adjective when the noun is modified by an adjective. जब भी कोई noun adjective के इस्तेमाल से modify किया जाएगा तब हम article को adjective के सामने रख सकते हैं जैसे the tall tree. We won't say tall the tree but we'll say the tall tree. इसी तरह से another example is an honest boy, not an honest and boy but an honest boy. The third one is a soft blanket, not soft a blanket but a soft blanket. The third rule is do not use an article when the noun has a possessive word, that is my, his, her or. अगर कोई भी possessive word noun के सामने लग रहा है तो फिर we are going to remove the use of articles from there. For instance, यहाँ पे आ जाता है my bag. So a bag हम कह सकते थे but we are not going to use it. Why? Because we have used a possessive word here. My bag, her pencil, this book. हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी में भी we haven't used any article. अब we are going to dive into the details of indefinite article so that we can know कि हमको कहाँ पे और कैसे use कर सकते हैं and then followed by the details of definite article. अभी हमने last page पे पढ़ा कि indefinite articles की 2 types हैं a and an. A and an are used with singular countable nouns. वो nouns जो कि singular हों और वो ही nouns जो कि countable हों. हम उन्हें count कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 की तरह. तो उनके लिए a या an का article indefinite article use होता है. Examples देख लेते हैं. We use a before a word that begins with a consonant sound. हमें 2 तरह की sounds का पता है, vowel का और फिर consonants का. अगर तो consonant से noun शुरू हो रहा है तो फिर हम उससे पहले a का इस्तेमाल करेंगे. A cat is sleeping on the chair. We won't say an cat is sleeping on the chair but a cat is sleeping on the chair. The second one is कि we use a to talk about something for the first time. अगर किसी भी ऐसी चीज़ को हम बात कर रहे हैं जो कि हमने पहली दफ़ा देखी है, पहली दफ़ा कर रहे हैं तो उससे पहले भी a का इस्तेमाल होगा. For example, I saw a kite in the sky. I saw a kite in the sky. This is the first time something has been seen, therefore a का इस्तेमाल हो रहा है. फिर third rule is कि we use an before a word that begins with a vowel sound. Vowels की हमने अभी बात की थी तो elephant for instance in the given sentence e से start हो रहा है, e is an vowel. तो फिर इस वजह से an elephant is very strong. We won't be saying कि a elephant is very strong but an elephant is very strong. Why? Because elephant is starting with a vowel sound. Then the last rule is कि we use an with words that begin with a silent consonant. For example, H. जब हम next sentence में देख रहे हैं he waited for an hour तो hour के अंदर हम H को pronounce नहीं कर रहे, it is silent. Therefore ऐसा कोई भी word होगा तो उससे पहले
एन का इस्तेमाल होगा, ना कि ए का। Now we move onwards with the definite article जिसके अंदर एक ही word है specifically and that is the. The is used to refer to a person which is specific or a place that is specific or a thing that is specific. Rules देख लेते हैं और साथ ही examples भी देखते हैं. So the first rule is कि there is used when a singular common noun represents a whole class. जैसे कि the tiger is a wild animal. Now it could be tiger 1 or tiger 2 or tiger 3 or tiger that lives in Bangladesh or tiger that lives in somewhere else, wherever in the world, but tiger is a wild animal. So when the entire class of that tiger, the tiger species, उसको हम जो है represent कर रहे हैं with the given description, therefore हम यहाँ पे the का इस्तेमाल करें. The tiger is a wild animal. The second rule is कि it is used for something already mentioned. जैसे कि I bought a pen. The pen is blue. अब पेन का पहले भी जो है पिछले सेंटेंस में we have already mentioned कि हमने पेन जो है वो खरीदा. Therefore second sentence के अंदर हम a pen is blue नहीं कह रहे, the pen is blue कह रहे हैं to hint कि उसी पेन की बात हो रही है जिसका पहले mention हो चुका है. The third rule is कि it is used with names of rivers and seas. जैसे कि the Indus River flows through Pakistan. So if we are taking names जो कि किसी रिवर का है या किसी पर्टिकुलर सी का है, इवन देन व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी आर यूजिंग अ डेफिनेट आर्टिकल उससे पहले, उसके नाम से पहले, और वो कौन सा वाला है, द. सो देयरफॉर द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू Pakistan. And then we have another rule that says कि it is used before superlative adjectives. कोई भी superlative adjective होगा, superlative adjective वो होता है जो extreme की आपको quality बताता है. For example, she is the tallest girl in the class. तो tallest का मतलब है सबसे जो tall है लड़की उसकी बात हो रही है, extreme quality की बात हो रही है. तो she is the tallest girl in the class. The next rule is it is used before directions. If you are to direct someone somewhere, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो फिर वहाँ पे भी द का इस्तेमाल आएगा. जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हमने डायरेक्शन ईस्ट से पहले द का इस्तेमाल किया. द लास्ट रूल फॉर डेफिनेट आर्टिकल्स इज दैट इट इज़ यूज्ड बिफोर यूनिक नाउन्स. वी हैव सम यूनिक नाउन्स. फॉर इंस्टेंस, द स्काई लुक्स क्लाउडी टुडे. सो द स्काई एक यूनिक चीज़ है, उसको किसी और चीज़ से नहीं मिलाया जा सकता. द स्काई लुक्स क्लाउडी टुडे. These are certain rules, students, जो कि हम indefinite articles और definite articles के साथ associate करते हैं ताकि हम उसको sentences में इस्तेमाल कर सकें. And now what we're going to do is कि we're going to move forward to the next page, page 49, जिसमें we have a few blanks, और उन blanks में हमने suitable articles जो है वो add in करने हैं, चाहे वो indefinite हो, चाहे वो definite हो. For instance, the first one is कि इलामा इकबाल Rahmatullah alayh was dash great poet. He was a great poet. So Allama Iqbal was a great poet. The second one is कि I want to write dash letter to my teacher. Again, we will see कि हमारे पास letter is a consonant and it is a singular one. So and it is countable of course. So therefore, I want to write a letter to my teacher. Then the third one is कि look at dash stars in the sky. It's something unique, so look at the stars in the sky. The fourth one is Ali is dash only child in his family. So he is again a unique one. So Ali is the only child in his family. Then we have another one that is the horse is dash useful animal. तो हम देख रहे हैं कि horse as a whole class, हर हॉर्स की बात हो रही है यहाँ पे. घोड़ा चाहे पाकिस्तान का, चाहे इंडिया का, कहीं का भी, इट्स ऑल taken as one singular class. तो इसलिए the horse is a useful animal. Next we come towards another one, turn towards dash left. हम देख रहे हैं यहाँ पे direction का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे turn towards the left, the का इस्तेमाल आ जाएगा. The next sentence is कि she is dash honest student. हम देख रहे हैं कि honest is starting with an H, but H की sound नहीं है, therefore हमने यहाँ पे indefinite article an का इस्तेमाल करना है. She is an honest student. The last sentence is कि कासिम is dash strongest boy in the class. हम देख रहे हैं strongest का इस्तेमाल हो रहा है. Strongest is a superlative adjective and therefore यहाँ पे हम there का इस्तेमाल करेंगे. कासिम is the strongest boy in the
class. This was easy. I hope कि यहाँ पे हमने जो rules हैं उसको use किया है और देखा है कि किस तरह से हम जान सकते हैं where do we put an indefinite article and where do we put a definite article. And it's time कि हम singular nouns that look plural की तरफ बढ़ें. So there are a few nouns जो कि singular होते हैं लेकिन they sound as if वो plural nouns हैं. Let's see ये कौन से हैं. Read the given sentences and notice the use of singular nouns that look plural. For instance, mathematics is taught from early classes. तो S के ऊपर end हो रहा है but it's not plural. Therefore इसके बाद is का इस्तेमाल है, are का इस्तेमाल नहीं है. Mathematics is taught from early classes. The second one is the news is very encouraging today. News एक particular piece of information है, एक ही है लेकिन उसके साथ जो है हम s का इस्तेमाल देखते हैं by the end. Therefore it looks plural but it isn't. Therefore the news is very encouraging today. इसी तरह से same way Physics is my favorite science subject. Physics को हम यहाँ पे देख रहे हैं. And then we have another one कि measles is a dangerous disease for children. Measles again it is a single disease और उसके आगे is का इस्तेमाल किया है, चाहे इसके end पे हम s लिखा हुआ देख रहे हैं but we already know कि it looks plural although it isn't in actual a plural noun. Therefore measles is a dangerous disease for children. Above mentioned nouns look plural because they end in s. Again, wahi same cheese that we have just said, but they are singular in meaning. We always use them with singular verbs. जो कि हमने देखा कि is है. Now next we have is कि nouns having only plural form. कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ plural form के इस्तेमाल किया जाता है. Read the given sentences and notice the nouns having only plural forms. Let's see, my jeans are too tight. Now it's only, you won't say my jean is too tight. You'll always say my jeans are too tight. And then my trousers are hanging in the wardrobe. You won't say my trouser is nothing. My trousers are hanging in the wardrobe. It doesn't mean it's more than one, but एक ही trousers हों तो वो भी trousers ही कहलाता है. These scissors are very sharp. There is no such thing as a scissor. We have scissors always. And in the same manner, how many stairs are there in the building? Right? तो इसमें भी हम s add करते हैं. Stair is not basically any word. These nouns highlighted words are always written in plural form. We use them only with plural verbs. Now we come towards the next question, which is making sentences of your own using the following nouns. We have a few nouns provided: economics, billiards, news, clothes and sunglasses. और हमने इनके sentences बनाने हैं. So we have to find out if these nouns have only plural form या फिर these are singular nouns that only look plural. Economics is my favorite subject. For an example, billiards is a game I do not know how to play. या फिर न्यूज़, द न्यूज़ टुडे was quite disturbing. या फिर clothes की तरफ आ जाते हैं, my clothes are hanging in the wardrobe. या फिर sunglasses, I do not like wearing sunglasses. Stuff like that you can come up with your own sentences, right? Then we have another thing, another very interesting thing जिस तरह हमने पिछले chapters में भी देखा, हम sentences की different forms को जो है वो देखते आते हैं. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंसेस के और इसी तरह से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा और अब हम अगले टेंस की तरफ आ चुके हैं विच इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. द सिंपल फ्यूचर टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. कोई भी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में होने जाना है या होने जा रहा है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखते हैं और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है आइए उसको भी देख लेते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू व्हाट अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर. अफर्मेटिव सेंटेंस वो है जो काम होगा, पॉजिटिवली गिविंग अस द हिंट कि ये काम है या हुआ है या फिर हो रहा है या फिर अब अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फिर होगा, डेफिनेटली होगा. सो वी ऑलवेज हैव अ सब्जेक्ट एट द वेरी बिगिनिंग, देन वी हैव the use of either will or shall, and then we add the base form of our verb, and lastly what we do is के end the sentence with the object. Example देख लेते हैं. Ali subject है, will visit Karachi next year. Future में होने वाला काम है
एंड ऑल्सो अली के बाद विल, फिर उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड विजिट, एंड देन फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है कराची नेक्स्ट ईयर। एंड देन इसी तरह से एक और एग्जाम्पल जिसमें हम शल का यूज़ करें, वी शल क्लीन दी क्लासरूम, कि हम करेंगे clean the classroom. So this is again a simple future tense structure of the sentence. Then we have ये affirmative sentence था. Now we move towards the negative sentences. हम पे we will talk about things in the future again which will not happen. तो will और shall के बाद simply not के addition है और बाकी पूरा का पूरा structure is the same. Example, Aisha will not make dough today. या फिर we shall not waste food. खाना ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरह से we're gonna move on to interrogative sentences. तो simple future tense का interrogative sentence कैसे बनेगा कि हम will और shall को सबसे शुरू में ले आएंगे और फिर subject, base form of the word और object in the same sequence ending with a question mark. Example, will Sarah help her friend? Question mark, right? Or shall we plant trees in the school garden? Question mark. So let's read the following sentences which are provided on page 50. He will complete his homework on time. We see that he will do it. This is simple future tense and affirmative structure, right? I shall help my sister with her work. Same structure. Ahmed will not break his promise. Simple future tense and negative structure. Will you drink a glass of milk? This is an interrogative sentence. Then the police will catch the thief. Now we are seeing कि एक affirmative stance लिया जा रहा है, therefore this is an affirmative simple future tense. Shall we play cricket after school? Question mark पे end हो रहा है, this is an interrogative one. And we shall not throw rubbish on the road. तो इसमें क्या है, we have a not added shall के बाद, या फिर अगर will का भी कहीं पे इस्तेमाल है और उसके बाद not आएगा तो we have this negative future tense. Write 5 sentences of your own using the simple future tense. अब जिस तरह से we have a lot of examples of how we can use simple future tense जब हम अपना sentence बना रहे हैं. So इसी तरह से what you guys are going to do is कि you are going to write or come up with 5 sentences on your own. कोई भी 5 sentences जो कि future tense में आप लिख सकें. We have another very small thing over here which is known as an exclamation mark. ये एक punctuation का part है और ये क्या है? An exclamation mark is used at the end of a sentence to show strong feelings or emotions such as surprise, pain or happiness. जब emotions को या feelings को portray करते हैं अपने sentence में तो फिर उसके end पे एक exclamation mark लगा देते हैं. Example के तौर पे ouch, that really hurt. तो ouch के end पे we see an exclamation mark. एक और जो example है provided, that is oh no I'm all alone. Oh no sadness और grief जो है वो show कर रहा है, feeling of being left alone show कर रहा है, इस वजह से उसके end पे we see कि there is an exclamation mark. And the last example provided is wow what a beautiful day. So wow के end पे और what a beautiful day itself एक expression था, इन दोनों के end पे हम देख रहे हैं कि exclamation mark का इस्तेमाल किया जा रहा है. And so we move on and we are now going to go forward with the punctuation. There are a few sentences which are provided और हमने उसमें appropriate punctuation mark add करना है. For example, the first one is hurrah, we have won the match. तो hurrah के बाद I think we are going to add an exclamation mark and we have won the match भी एक बहुत ही excited से expression के साथ बोला जाता है, therefore उसमें भी एक end पे exclamation mark आएगा. She went to the market yesterday. She went to the market yesterday. There is no feelings involved. It is something that happened. So end के ऊपर we are only going to add a full stop. I received the best gift today. I received the best gift today. This has to end with a period or a full stop. फिर उसके बाद we have my mother cooked a delicious meal for us. My mother cooked a delicious meal for us is again something which is stating कि कुछ हुआ, right? So इसके end पे भी एक full stop आएगा. He saved my life. He saved my life. इसके end पे भी we will see we can do it both. He saved my life एंड पे वो आ जाएगा exclamation mark या फिर you can say he saved my life और फिर उसके end के ऊपर जो है वो full stop भी इस्तेमाल
हो सकता है depending on the expression on which the particular sentence is being said. So students, this was the entire exercise. I hope कि आपने बहुत कुछ learn किया है. I also enjoyed going through it all. We studied about articles, we studied literary devices, we studied a new sentence structure, and also we had a huge moral to learn from कि how should we act और be with और behave with our friends, कि अगर हमने सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहना है तो उसके क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए हमें किस तरह से काइंडनेस के साथ दूसरों के साथ रहना है, और अगर हम नहीं करते तो what can be the end of it. So with all that, I hope that you will learn more, you will keep on exploring more about this particular concept, and take care. We'll meet in another video. Allah Hafiz.